Hello, students of SYBCOM, NEP 2020 pattern. I'm here with a step-by-step guide on filling of exam form and selecting the SYBCOM NEP subjects. This video is for all the students, but very specifically for Poona College students because the subjects that I will be discussing will be more so relatable for Poona College students. But if you're from other college as well, except OE and AEC, rest of the subjects are going to be the same. So let's directly dive in. What you need to do is you need to go to Google, and on Google, you need to type SPPU exam form. The first link, that is exam form SPPU, will be coming up. Click on that, or you can directly type this in your window, examform.unipune.ac.in, and this is where you will be landing. On this page, click on login, enter your mobile number and your password, or your email ID and your password, which you had created last time, and say login, captcha, and click on login. In case you do not remember your ID and password, you can click here and get it on your mobile number. Next, once you log in, your details will be shown over here, your PRN number, eligibility number, your name, everything will be shown. What you need to do is click on exam form. Once you click on exam form, it will take you to this page where you click on proceed, and this is where you go. Please be very careful. You are a second year student, so you are an other than first year student. So kindly select this option and click on create new application. You will click on other than first year non-engineering and create new application. Once you click on that, you will be taken to a page where your personal details will be shown. What is your name, your address, your Aadhaar registration number, Unipune ID, everything will be shown over here. Click on next. This is not editable. Just simply click on next, and this is where you will come. This is a very, very important place. You need to select your specialization that with which you have enrolled in your college. Suppose you're a student of cost and management accounting, you will select this option. If you are a student of business administration, you will select this option. If you're a student of marketing, you will select this option. Or a student of banking, for example, will select this option. For your simple understanding of students of Poona College, this is A division, banking. B division is costing. I will explain that in the slides to come. C division is marketing and D division is administration. So once you click on one of these specializations, you need to click. Now, for example, in this case, I've clicked on banking. So SYBCOM A division students of Poona College, if your specialization is banking, finance and insurance, so you will select this option. The moment you select this option, this list will appear. These are your subjects by default. Okay, by default आपको ये subjects आए हैं. बाकी के जो सेकंड लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है वो आपको सेलेक्ट करना है. AEC एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, ये जो ये आपको सेलेक्ट करना है. बट बिफोर दैट, SYBCOM A division students, please pause the video here and take a screenshot of this page. Now, SYBCOM B division students of cost and management accounting, I want you to pause here and take a screenshot of this page. SYBCOM Division C students of marketing, kindly click this here. You have to select marketing option, and then your subjects will automatically come here. And the further part, AEC, I will explain later for all of you together. Please take a screenshot of this. SYBCOM C Division marketing students. SYBCOM D Division students of business administration, you have to select business administration over here, and these subjects will come up. So kindly click a screenshot of this as well. SYBCOM D division students of business administration. Now, once you have selected your subject, your course specialization, you need to select AEC, that is your ability enhancement course. In Poona College, we are offering Hindi and Urdu. In other colleges, there's Marathi and Sanskrit as well. So you can select any of these options. And once you select your option, suppose now if you're a student of Hindi, so kindly select this option. If you're a student of Urdu, kindly select this option. Okay, depending on your AEC, you will select that. Moving on to OE, that is your open elective. Now the last part, if you see in the previous slide, this part, there are 4 drop downs over here. So in each drop down, what do you need to select? I have explained in the next slide. For OE, select these options. Under this select faculty for OE, you will select humanities. For SYBCOM students of Poona College only, you will select humanities. Under this, arts, fine and performing arts. And under course, you will select Bachelor of Arts. And the last one, open elective, you will be selecting Introduction to Stock Market. It is OE 201. OE 201 Eco, Introduction to Stock Market. This will be your OE.
ओपन इलेक्टिव हैज टू बी फ्रॉम अनदर स्ट्रीम। सिंस आप कॉमर्स के बच्चे हैं, आप आर्ट्स का इलेक्टिव पढ़ रहे हो, दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। आई रिपीट, दिस ओई ऑप्शन इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ SYBCOM ऑफ पूना कॉलेज। ओके, वंस यू सेलेक्ट दिस, ये चार ऑप्शंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ओई, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। ये चार ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। ये देखिए, आपका कुछ इस तरह दिखेगा, आपका ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। ओके, वंस यू फिनिश विद दिस एंड क्लिक सेव एंड नेक्स्ट, आपको इस पेज पे लिया जाएगा जहां पे आपकी फीस दिखेगी और वहां पे नीचे यहां पे आपको प्रीव्यू का एक ऑप्शन है। प्लीज एंश्योर यू क्लिक ऑन दिस प्रीव्यू बटन एंड चेक कि आपने जो सिलेक्ट किए सब्जेक्ट्स, जो आपके सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए हुए हैं आपने, वो सारे सब्जेक्ट्स वहां दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, यू नीड टू क्लिक ऑन आई हैव रेड द चेक पॉइंट्स, प्रीव्यूड माई एग्जाम फॉर्म, आई एम सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय मी। ये चेक करके आपको सबमिट करना है। जब आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा एक प्रीव्यू खुलेगा जहां पे आपका फॉर्म आपको दिखता है। यू कैन स्क्रॉल डाउन, ये स्क्रॉल करके आप नीचे एग्जाम के सब्जेक्ट डिटेल्स देख सकते हो। एंड फाइनली वंस यू कंप्लीटेड इट, आपका डैशबोर्ड कुछ ऐसे दिखेगा। बैचलर ऑफ कॉमर्स 24 क्रेडिट पैटर्न कंप्लीट, एप्लीकेशन स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा। इनवर्ट नहीं हुआ है, चालान पेड नहीं है, और आपको प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है। आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। वंस दैट पीडीएफ फाइल इज डाउनलोडेड, यू नीड टू, इट लुक्स लाइक दिस इज व्हाट योर प्रीव्यू फॉर्म ऑफ पीडीएफ विल लुक लाइक। उसमें ऐसे प्रीव्यू पीछे लिखा रहेगा। वो प्रीव्यू फॉर्म आपको लेकर कॉलेज आना है। कॉलेज में आके आपको आपके क्लास टीचर से, जो आपके ग्रुप पे शेयर किए गए हैं, आपको क्लास टीचर से आपको मिलना है, उसको अप्रूव करवाना है सब्जेक्ट्स को। फिर एग्जाम डिपार्टमेंट में यू हैव टू गो, यू हैव टू सबमिट द फॉर्म, शो द प्रीव्यू फॉर्म ओवर देयर। दे विल डू एन इनवर्ड, द कॉलेज विल डू एन इनवर्ड। वंस कॉलेज डज दैट इनवर्ड, आपको वापस से इसी वेबसाइट पे आना है और यहां पे आपको पे ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाएगा। अभी देखिए, पे ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं है। ये जब इनवर्ट हो जाएगा फॉर्म, इनवर्ट स्टेटस डन आएगा, तो आपको इन्वर्टेड ऐसे लिख के आएगा, तो आपको यहाँ पे पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। आप पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, पैसा पे करेंगे, फिर पैसा पे किया हुआ रिसीट, और यहाँ पे आपको एक्चुअल प्रिंट प्रीव्यू जाके एक्चुअल फॉर्म आ जाएगा आप यहाँ पे प्रिंट के लिए। वो फॉर्म का प्रिंट एंड जो चालान आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर की गई है उसका प्रिंट, और जो डॉक्यूमेंट्स आपको बोले गए हैं, वो सारा बंच आपको फिर वापस कॉलेज आके उसको सेकेंड टाइम में आके कॉलेज के एग्जाम डिपार्टमेंट में जाना है और वो पूरा का पूरा फॉर्म आपको जमा करना है। सो आई रिपीट दिस प्रोसेस। आपको क्या करना है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट थ्रू अ सिंपल मेथड। So step one is what I just showed you, filling the exam form. Step two, see the preview and take a printout of the same. Step three, visit college with the preview print and meet your class teacher and get the form signed by your class teacher. Step four, visit exam department of Poona College with the preview form that has been signed by the teacher and get the form in Word. Step five, once the form is in Word, you need to go back to the SPPU website, and I'm sorry for the correction there. Website https examform.unipune.ac.in and pay the required exam fees. And the final step, take a printout of the final form along with the fees that you've paid online, uska receipt, and the documents that have been asked in your group. All those things need to be submitted to the exam department, and only then your exam form filling process will be completed. Please remember that you have very little time left because the university is going to start charging late fees very soon. So you're requested to kindly complete the procedure as early as possible, maybe by tomorrow and day after, as early as possible. If you have any questions, any queries, feel free to write in comments below. You can ask your questions. I will reply to them as and when possible. If there is any guidance that you require, any help that you require, you can visit the college and meet your respective teachers, class teachers, and we are more than ready to help you out. Thank you so much, and do share, comment, and ask for any help that you require. Thank you so much. This is Dr. Sharif signing off. Bye bye.